Story we're tracking here on the broadcast. 8 terrorists, hardcore terrorists of the Students Islamic Movement of India have been gunned down after an encounter with the Madhya Pradesh Police. The encounter took place barely 11 kilometers from the Bhopal Central Prison. These are two images you see on your television screen. One of that encounter site and two of the 8 slain terrorists. But politics on the subject is already peaking. The information that's available so far seems to indicate that the 8 terrorists had overpowered the prison guard around 2 last night. Bhopal Central Prison, when the changeover was taking place, they overpowered the prison guard Rama Shankar Yadav. They killed him. They injured the other guard, overpowered the other guard, and then using bed sheets, apparently they scaled a 20 feet high wall and escaped. An alarm was sounded around 3 in the morning. Special teams of the Madhya Pradesh Police, the anti-terror squad, the special task force were formed. They fanned out, and around 11 this morning there was an encounter. The Madhya Pradesh Police claims there was a gunfight, and in self-defense the police opened fire, killing all 8 terrorists. I want to quickly once again listen in to Bhupendra Singh, the Home Minister of Madhya Pradesh. I spoke to him some time back. Let's listen in. ये इनकाउंटर कहां हुआ? क्या उनके पास हथियार थे? ये अचारपुरा के पास परवलिया मालिखेड़ा है, यहाँ पर ये इनकाउंटर हुआ है और इसमें हमारी मध्य प्रदेश पुलिस को ऑटो को मार गिराने में सफलता प्राप्त हुई। क्या उनको जिंदा पकड़ना संभव था भूपेंद्र सिंह जी? नहीं, काफी प्रयास किए गए पर वो लगातार भागने की कोशिश कर रहे थे और कोई रास्ता नहीं था और इसलिए मारना पड़ा। कांग्रेस का कहना है कि इसमें जांच होनी चाहिए कि कैसे 2:30 बजे वो गायब हुए, जेल तोड़कर भागे और 11:30 तक इनकाउंटर भी हो गया और 8 मर गए, 8 आतंकवादी मार दिए गए। क्या आपको लगता है ये जांच का विषय है? कांग्रेस तो हमेशा आतंकवादियों को मदद करती रही है और आतंकवाद आज देश में कांग्रेस की गलत नीतियों का ही परिणाम है। प्रेस उनसे पूछना चाहते कि वो क्या चाहते हैं आतंकवादी हो दिया जाए। किंतु क्या ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के रूप में नहीं इसे देखा जाएगा कि 2:30 बजे आतंकवादी जेल से फरार होते और 10 बजे 11 बजे तक उनका 8 का इनकाउंटर हो गया? अगर उनके पास हथियार नहीं थे तो उनको जिंदा पकड़ना संभव नहीं था? इसको तो बढ़ा देना चाहिए सरकार को। कार्रवाई हम लोगों ने की है, इतने खुनखार आदि में पूरी देश की सुरक्षा को खतरा था, अनेक लोग मारे और उसके बाद अगर कांग्रेस को बधाई नहीं दे तो कम से कम देना ही चाहिए था सरकार को। पर इतनी राजनीति में इतने ऊंचे स्तर पर कांग्रेस आएगी हम लोग सोच नहीं सकते। Yogesh Chaudhary is the Inspector General of Bhopal Police, and he gave India Today and journalists on ground more details about the encounter, how that encounter took place, and the Madhya Pradesh Police claims that these 8 terrorists were armed. एक इनपुट मिला था इसमें, उस इनपुट पर वर्क करने के लिए जो जिला पुलिस भोपाल की टीम थी और सीटीजी और एसटीएफ वाली भी टीम्स थी, इन तीनों ने मिलकर जो है इन 8 आरोपियों को जो है वो लोकेट कर लिया था। आरोपियों द्वारा जो है इसमें भागने के प्रयास करने के चक्कर में उनके द्वारा फायर किया गया। पुलिस द्वारा आत्मरक्षा जो फायर किया गया उसमें ये 8 आरोपी जो है वो यहाँ पर मड़ीखेड़ा पठार एरिया है अचारपुरा के पास में, वहाँ पर ये सारे जो है इन लोग की डेथ हो गई। इनके पास हथियार थे, क्रॉस फायरिंग हुई थी और पुलिस की टीम ने और सीटीजी और एसटीएफ वालों ने बड़ी बहादुरी के साथ एक इतने गंभीर अपराधियों को लिक्विडेट। Manish Tiwari of the Congress Party, former Information and Broadcasting Minister, he said it looks too pat. 2:30 to 3, these terrorists escaped from prison. They kill a prison guard, and within the next 8 hours, all 8 are killed. Of course, he added a caveat that there is still more clarity that's required on that subject. But Digvijay Singh has raised similar questions. I want to now cut across to India Today's Kamaljeet Kaur Sandhu. Kamal, do we have more details
about how these terrorists escaped and the encounter? Well, the sequence of details is quite clear. They tried to escape between 12 to 3 o'clock. This is really what happened. They used a sharp-edged weapon from within this particular jail. They cut throat open of a head constable. They managed to escape from the 20 feet high wall. Now, the fact remains that there has been a negligence on different levels. One is when they managed to break open the prison cell, they killed a constable, moved ahead further, scaled a 20 feet wall. Many are going to ask, is this is too filmy, but yes, this was real life. They managed to escape. Was there a vehicle which really helped them in their escape? Why could they not get caught? Because the information came in that the manage when they were escaping, that's the time the prison guards got alert. The other part is, was there a vehicle which was waiting outside? How did they procure weapons? If there is an exchange of crossfire, if there was information which came in, what is the sort of information which was available? We've been also told that there seems to be certain contradiction. The Home Minister had earlier told a few journalists that there was no crossfire, while Yogeshwar Chaudhary, the IG there, has been mentioning that few of them had weapons. What kind of weapons? What is the proof that they were fire which was shot from those particular weapon itself? These are the questions which are going to be asked. But yes, the Congress and the BJP may be doing politics over it. Many talking about nationalism. The fact is, some of these questions could actually be very valid. One is on the negligence part, the other being about the encounter itself. If this is a genuine encounter, and many would say if these were hardcore terrorists, they would know how to escape and how to escape undetected. Here they've all been together. There were no separation. They didn't try and move in different directions. They obviously knew the first place that the entire police is going to look around is near Bhopal, and obviously even the state police as well as neighboring district police were alerted. So all these is going to be a sequence of events. But at this point of time, if there are questions being raised, these questions would need to have certain answers. Well, we are waiting for those answers, and some of those questions, as Kamal's raising, are why were these 8 terrorists and hardcore terrorists of the Students' Islamic Movement of India, why were they together in the prison cell? How could they overpower one jail official and kill him? What were other jail officials doing? Was there complicity in their escape? How could they then scale a 20 feet high wall? What were the prison watchtowers doing at that point of time? Not one, not two, but 8 of them managed to escape. What was the help that they had the moment they came out? Considering if the Inspector General of Police in Bhopal is claiming that there was an encounter and that there was a gunfight, an exchange of fire, which means these 8 terrorists, after escaping from prison, had access to weapons. Where did they get weapons from? Any clarity on this aspect? What was the outside support these terrorists have? Who gave them weapons, and where did those people disappear? Well, absolutely. These are gaps in what the theory that police is suggesting. They'll really have to say as to how and what kind of help these convicted prisoners really get. How they managed to escape. Was it vehicle? Were they on the foot? The fact is, if they were surrounded, as to whether there was a gunfire which was exchanged, and obviously they've been gunned down, so there would have been some exchange of fire. The other part obviously is that earlier we've seen in controversial cases, whether that be Batla or the Ishrat encounter case, the fact is to lay down weapons on escaped terrorists or killed terrorists is not something which is new to police. This has been happening. Has it happened in this particular case itself is a question many, including the human rights activists and now even political parties, are raising. So yes, if there is a certain doubt and if there is a magisterial inquiry, they'll really look into all these particular aspects. And yes, once the inquiry, there has to be not only forensic, there has to be a certain detail as to what the police is suggesting and what the encounter is like. Has to really add up. All this needs to be done. So even before the BJP, for that matter, CM of Madhya Pradesh pat the back of Madhya Pradesh Police and the ATS, many questions will have to be answered. Okay, keep tracking that story. Kamal, the Union Home Ministry, we are told, has issued a nationwide alert to jails which has terrorists. Now, the centre has asked all jails to strengthen security. The Home Ministry advisory comes after the jailbreak by SIMI terrorists who have of course now been gunned down. The advisory has been sent to all states to enhance watch over inmates, especially those facing terror
charges. And this is very, very significant because there are several under trials and convicted terrorists who are in jails in other cities, in several cities across the country, Kamal. Well, absolutely, Gaurav. This is something which is of specific use, especially at the time where there has been a jailbreak. And remember, one in 2013 in Khandwa and 2016. And immediately after this entire incident came to light, there has been an advisory which has been issued. And remember, this comes post-Diwali, post-Govardhan Puja, where the Ministry of Home Affairs itself seems to be on a holiday. But they've ensured that the advisory has gone to different. And we've seen whether it is Delhi's own Tihar jail or, for that matter, jails across the country. A high alert has been sounded. They have to be extremely careful, not just at the borders and the LOC where there is an alertness 24/7. There has to be a high level of alertness. And remember, because there are terror modules, there have been convicted terrorists who are serving in different parts of the country in high secure prisons. But with this incident coming to light, there is a concern that this could actually not just be a precedent, but this could actually be an inspiration to other modules as well. So yes, an alert level has gone out. Law and order is a state subject. Jail is obviously something that state police takes care of, but nonetheless the Ministry of Home Affairs has sent out an alert asking all jail authorities to keep the vigilance up and obviously strengthen security as a measure. Stay with me for a moment. So how could these terrorists escape is point one. How far did they go? Now my colleague Devina Gupta on Google Map gets you the lowdown on this. The location which we're mapping out here, this is the Bhopal Central Jail that you can see on the map, and just about 11 kilometers from here, if I can take our viewers through it, this is Einthkhedi, where the encounter has taken place. So Bhopal Central Jail around midnight yesterday is when 8 SIMI terrorists managed to flee from this high security prison, and after much of media pressure, India Today was first to also get exclusive details on the story. 11-kilometer where they're spotted by a villager, according to initial reports, at Einthkhedi village, where one of them was washing their face, and then they informed the ATS as per the initial reports coming in, and that's where the encounter has taken place. A much political firefight that we've seen on the ground, but interestingly, Einthkhedi is about 11 kilometers from the jail where they managed to escape. It's got 20 feet high wall as well, Gaurav. So questions also being raised how they were able to procure bedsheet, ropes, and even a sharp object, scale the wall, managed to cross 11-kilometer distance from midnight to say about 11 a.m. in the morning, where the first report came out of the encounter taking place, and finally they were gunned down at Einthkhedi village. And now there's a political face-off brewing over this encounter of 8 SIMI terrorists hours after they escaped from Bhopal jail. Aam Aadmi Party has joined in. Aam Aadmi Party MLA Alka Lamba questioned the encounter, saying all 8 terrorists fled together and were killed together. It seems like the government has applied the Vyapam formula. And Kusum Maithili, Jail Minister of Madhya Pradesh, joins me on the broadcast. Kusum ji, can you tell us how did these terrorists escape? हेलो जी कुसुम जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर कैसे 8 आतंकवादी जेल से फरार हुए? हाँ जी रात को जैसे तो भी इन्हें मौका मिल गया और उन्होंने बताते हैं कि वो मुझे 4 बजे सूचना मिली सवेरे, और 4 बजे मैंने आदेश दिए कि जैसे भी हो इनको आतंकवादियों को जिंदा या मुर्दा पकड़ा जाए, और आदेश दिए कि तत्काल कार्रवाई करते हुए पकड़ा जाए और जो भी दोषी व्यक्ति हो उनको उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए। तो 4 व्यक्तियों को हमने सस्पेंड किया है, और जैसा कि आपको पता है कि हमने 8 आतंकवादी जो है ईंटखेड़ी के पास में, कौन सा गाँव, आचारपुरा में 8 के 8 मार गिराए हमारे मध्य प्रदेश की पुलिस ने। लेकिन ये फरार कैसे हो गए पहली बार, और 8 एक ही साथ क्यों थे? कहीं ना कहीं देखिए, अब हमें स्वीकार करते हैं, मेरे संकोच नहीं है कि कहीं ना कहीं थोड़ी चीज यानी लाख अच्छा इंतजाम करने के बाद में, लाख चौकसी बरतने के बाद भी हमारे किसी न किसी अधिकारी कर्मचारी से लापरवाही तो हुई है, और हमने उसको तत्काल दंड भी दे दिया है। जी, और क्या इनको जिंदा पकड़ना संभव नहीं था, क्योंकि जितने आतंकवादी हैं सब मार गिराए गए, क्या जिंदा पकड़ने का प्रयास नहीं हुआ? यह जिंदा पकड़ना बिल्कुल संभव नहीं था, क्योंकि
क्योंकि उनके पास में असलहे वगैरह भी थे, जैसा कि ज्ञात हुआ है। और तो जिंदा पकड़ना अगर आसान होता तो संभव होता तो निश्चित रूप से हम उन्हें जिंदा पकड़ते, लेकिन संभव नहीं था, इसलिए चारों को 8 के 8 को मार गिराया गया। क्योंकि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों ही कुसुम जी अब प्रश्न उठा रहे हैं कि जिंदा क्यों नहीं पकड़ा, मार क्यों गिराया गया इन आतंकवादियों को। अब प्रश्न का तो ऐसा है कि प्रश्न अच्छी कार्रवाई के बाद भी प्रश्न उठ रहे हैं, तो मुझे तो तरस आता है। आज तो आप पार्टी पर भी तरस आता है, कांग्रेस पर भी तरस आता है कि अच्छे काम के, हमारे अच्छे काम की भी ये लोग तारीफ नहीं कर सकते। अरे इनको तो हमारे मध्य प्रदेश की पुलिस को, हमारे जेल प्रशासन विभाग को, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को, मुझे खुद को, जेल मंत्री को, माननीय गृह मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहिए, बधाई देना चाहिए कि हमने तो आतंकवादी कहीं और जाके नुकसान पहुंचा पाए, किसी और को कहीं और कोई वारदात कर पाए, उसके पहले ही हमने उनको समाप्त कर दिया। तो इस बात की हमारी तारीफ होना चाहिए। नहीं, लेकिन आप तो जेल मंत्री हैं, आपको तो मालूम है कि इनको पकड़कर अदालत के हवाले करना चाहिए और अदालत निर्णय करेगी। लेकिन अगर जेल से भागे और इनका इनकाउंटर कर दिया तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इस पर सवाल उठा रहे हैं कुसुम जी। वो तो उठाएंगे ही। वो तो अभी वो जो वहाँ पर उड़ी में सेना ने कार्रवाई की थी, ये सब ने कार्रवाई की थी, उस पर भी सवाल उठाए। तो विरोधी पार्टी तो किसी बात पर भी सवाल उठाएगी, लेकिन सवाल इस बात का है जिसके लिए हमारी तारीफ की जाना चाहिए कि हमने आतंकवादियों को, सिमी के आतंकवादियों को खुला नहीं छोड़ा, उनको मौका नहीं दिया और 3 घंटे के अंदर हमने उनको समाप्त कर दिया कि कहीं और ये नुकसान नहीं पहुंचाए। आखिर देश की सुरक्षा का सवाल है, मेरे देश की सुरक्षा पहले है कि आतंकवादी पहले है? लेकिन उनके पास हथियार कहां से आए? वो तो आपकी जेल में बंद थे, आपकी जेल से निकलकर उनको हथियार किसने दिए? फरार होने के बाद उनके संपर्क, उनके आका लोग रहे होंगे, यहाँ से उन्हें हथियार मिले। जी जी जी, ये तो वादी हुई सी बात है। लेकिन उसकी जांच नहीं हो रही कि कौन है उनके आका लोग जिन्होंने उनको हथियार दिए कुसुम जी? जांच हो रही है, जांच हो रही है। तो कल आप फिर मुझे फोन करेंगी तो मैं आगे की जांच का हाल बता दूंगी आपको, कौन थे उनके आका लोग। अच्छा, हमने इतना किया है तो उनके हाथों को भी ढूंढ निकालेंगे। जी जी जी, अरे कुसुम जी 1 मिनट जरा रुकिएगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के दिग्विजय सिंह वो ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इन आतंकवादियों को पहले भागने ही क्यों दिया गया और क्या इसके पीछे भी कोई साजिश है। सुनिए कुसुम जी, सुनिए क्या कह रहे हैं दिग्विजय सिंह। कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं दिग्विजय सिंह, महासचिव हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के। उनका ये आरोप है कि कहीं मिली भगत तो नहीं थी उनको जेल से भगाने में। अब ये बताइए, अब इसमें आरएसएस कहाँ से आ गई है? और तो आरएसएस कहाँ से आ गई? ये तो अब भाई मौका पा गए, वो भाग गए, तो हमने कार्रवाई भी तो की है। और मान लो इनके कोई आका है, कहीं कोई इनका संगठन है, तो हम उसको भी नष्ट करेंगे, उनको भी पकड़ेंगे। जांच चल रही है और इस त्वरित जांच में हमने जहाँ हमें गलती मिली है, हमने उनके विरुद्ध कार्रवाई की है। क्योंकि 2013 की अगर बात करें, जब खंडवा जेल से भागे तब भी मध्य प्रदेश के ही जेल से भागे, यही आतंकवादी भागे। 2016 में भी यही आतंकवादी भागे। अब जब इतने सारे आतंकवादी हमारे मध्य प्रदेश की जेल में है, सारे जितने सिमी के हैं सबके सब तो हैं यहीं पे, और हमने कार्रवाई भी तो की है, चाहे 2013 की बात हो चाहे 2016 की बात हो, हमने कार्रवाई की है और कारगर कार्रवाई की है, हमें सफलता मिली है, जिसके लिए हमें धन्यवाद दिया जाना चाहिए, हमें बधाई मिलना चाहिए, हमारे मध्य प्रदेश की पुलिस को बधाई मिलना चाहिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, और मुझे खुद मिलना चाहिए। जी, तो आप इस राजनीति से आहत हैं जिस तरह से कांग्रेस पार्टी या आम आदमी पार्टी प्रश्न उठा रहे हैं? निश्चित रूप से हम आहत हैं कि हमारे अच्छे काम की तारीफ भी ये लोग नहीं करते हैं, आलोचना ढूंढते हैं, हर जगह आरएसएस ढूंढेंगे, हर जगह केंद्र ऊपर के ढूंढेंगे, हर जगह मिली भगत ढूंढेंगे। अरे अच्छा काम करते हैं तब तो आप हमारी तारीफ करो। तो आप दिग्विजय सिंह जी को क्या कहना चाहेंगी, जो महासचिव हैं कांग्रेस पार्टी के, आप ही के राज्य के वह पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आप इस इनकाउंटर के बाद दिग्विजय सिंह जी को क्या कहेंगी? मैं ये कहना चाहती हूँ कि माननीय दिग्विजय सिंह जी महामंत्री कांग्रेस के काफी वरिष्ठ नेता है, सीनियर है,
सीनियर हैं हम, उनका लंबा अनुभव है, उनको इस तरह की उनको इस तरह का वक्तव्य शोभा नहीं देता। राष्ट्र की सुरक्षा का सवाल है। आज वो ये सवाल कर रहे हैं कि इनको इनको मार क्यों गिराया। अगर हम मार नहीं गिराते तो कहीं और जाके वारदात करते, कहीं और राष्ट्र की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाते। इस बात की तारीफ तो नहीं करेंगे कि हमने राष्ट्र को नुकसान नहीं पहुंचने दिया और तत्काल कार्रवाई करके हमने उनको ढेर कर दिया, समाप्त कर दिया। उस पर मिली भगत तो आरएसएस से सवाल उठा रहे हैं, जिस पर हंसी आती है कि इतने वरिष्ठ नेता को इस तरह के सवाल नहीं करना चाहिए। कुसुम जी, आपने हमसे आज तक पर या इंडिया टुडे पर बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। द प्रिजन्स मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश there saying that instead of congratulating the chief minister, the home minister herself, the prison minister and the Madhya Pradesh Police, the Congress and the Aam Aadmi Party were raising questions about this encounter. Now my colleague Kamaljeet Kaur Sandhu also with me on this story. Kamal, the questions that are now being answered by the Madhya Pradesh government, and that remains the big point. Have these questions answered? Have some of these questions been answered at this stage? The 8 men you see on your television screen, hardcore terrorists of Students Islamic Movement of India, involved in terror activities in the past, including the 2008 Gujarat Ahmedabad encounter where 57 people were killed. They, according to Kusum, the prisons minister of Madhya Pradesh, could have once again tried something like this. They could have tried another terror attack. There could have been a conspiracy for another terror attack. And if these terrorists who are convicted, if they escape from prison, if they are gunned down, how is it that the administration is to blame instead of being complimented for the encounter? She does concede there was a mistake. There was a problem that these terrorists managed to escape. But within 3 hours, according to her, around 4, she claims that they escaped. Around 7, they had information, and by 11, the information was out that all 8 had been gunned down. Many aspects to this story. How did these 8 terrorists manage to escape from a high security central prison? That's one question that remains unanswered. Did these terrorists have weapons? Well, the Inspector General of Police claims they had weapons. Who gave them weapons? That's again unanswered. Why did they have to be killed? Could they have been caught alive? All of that and much more on the other side of a short break. Stay with us.